Good morning to all my dear students. Have a nice day. As we discussed before, Faraday's law of electrolysis, Faraday's first law, second law of electrolysis. Now, we discuss about that application of electrolysis. What are the applications of electrolysis? इलेक्ट्रोलिसिस का एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ पे यूज हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस का एप्लीकेशंस. सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस आर एज फॉलोज. कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जो नीचे दिया गया है. एक एक में क्या है ना, फर्स्ट ए इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इसका प्रोसेस क्या है, इसके अंदर क्या क्या जाता है ना. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए प्रोसेस. इट इज वन टाइप ऑफ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट फॉर थ्री पर्पजेस. तीन पर्पज के लिए यूज हो सकता है. एक क्या है ना, यहाँ पे लिखा हुआ डिकोरेशन, सेकेंड प्रोटेक्शन एंड थर्ड इज रिपेयर. फर्स्ट गो टू डिकोरेशन. व्हाट इज डिकोरेशन ना, generally superior metals, most valuable metals like gold, silver, etc. are used in this type of process. This type of process generally used in case of superior metals. जो बहुत ज़्यादा कीमती मेटल होता है उसके पास ये यूज होता है. फॉर विच पर्पजेस? फॉर डेकोरेशन पर्पजेस. Go through the second one, for protection purposes. Electroplating is a process in which decoration use, protection use. In protection, it avoids rusting as well as attacking of base metals. जो बेस मेटल रहता है, एक मशीन का जो बेस मेटल रहता है वहाँ पे कुछ रस्ट ना लगे, इसीलिए इसको अवॉइड करता है, रोस्टिंग अवॉइड करता है. एज वेल एज अटैकिंग ऑफ बेस मेटल्स बाय ऑर्गेनिक एसिड. कुछ बाहर का ऑर्गेनिक एसिड, नेचुरल एसिड्स अटैक ना करे, इसीलिए वो अटैकिंग या रोस्टिंग को अवॉइड करता है. दिस आर द प्रोटेक्शन. दिस इज वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. और कहाँ यूज हो सकता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में? रिपेयर के लिए. रिपेयर के लिए कैसे यूज हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन ऑफ मेटल. इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन ऑफ मेटल, जो इलेक्ट्रॉन डिपोजिट होता है मेटल में बिटवीन ब्रोकन पार्ट्स. एक पार्ट, अगर यहाँ पे एक पार्ट, ये एक टोटल इलेक्ट्रॉन है, पूरा इलेक्ट्रॉन अगर ये ब्रेक कर जाता है तो क्या होता है, ये एक पार्ट होता है, ये एक पार्ट होता है. जो ब्रेकिंग होता है इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिपोजिट होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिपोजिट है ऑफ मेटल बिटवीन द ब्रोकन पार्ट्स हेल्प इन रिपेयरिंग ब्रोकन मशीनरी. दीज पार्ट्स हेल्प repairing, automatically repairs itself by the process electroplating, repairs itself to the machinery. These are the process of electroplating. Next, go to the second process, that is electro refining. It is one of the application of electrolysis, that is electro refining. Generally, the metals obtained, these metals are obtained from ore. Ore is the base metal that obtained from earth, directly from earth. Ore. These metals obtained from ore which contain impurities. जो मेटल हम डायरेक्टली अर्थ से लाते हैं वो क्या impurities कंटेन करता है. डार्टी मेटल्स, there are different types of substances, mixture of substances are there. We have to impure, these are impurity substances, we have to purify. The electro refining, these are refine, purifying. These substances or contain impurities. Metals like copper, silver, lead, etc. usually purified by this process. This process involves the purification of copper, silver, lead. कैसे प्यूरिफाई होता है ना, यहाँ पे एक प्रोसेस है. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक, एग्जाम्पल ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. कॉपर का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कैसे होता है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, टू, as we know,
in the process of electrolysis, there is one is anode, two electrode are used, one is anode and one is cathode. Then during the electro refining of copper, there is one is impure copper जो directly अर्थ से आता है, ओर से. Impure copper is used as anode and a sheet of pure copper, two electrode, one electrode used as anode and pure copper used as cathode. These are the two electrode used in the purification of copper. This is a diagram of purification of copper, of electro refining of copper. Electro refining of copper. This is the diagram. This is one electrode. This is another electrode. One is pure electrode which is act as cathode, and another is impure electrode which is act as anode. Now this is the solution we taken as H2SO4 solution, dilute H2SO4 solution, and here the two top end of the electrode is connected to a battery in which electricity is passed, so that electrolysis carried on. Here an aqueous solution of copper sulfate, one copper sulfate solution is taken which is acidified करेंगे with dilute H2SO4. H2SO4 is act as a acid. Copper sulfate is acidified with dilute H2SO, and आफ्टर दैट उसके बाद क्या करना है ना, पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट जब पास करेंगे इसके अंदर तो क्या होगा ना, कॉपर आयंस जो कॉपर मेटल रहता है उसके अंदर कॉपर आयंस मूव फॉरवर्ड्स कैथोड के डायरेक्शन में कॉपर आयंस ऐसे चला जाएगा. ये देखो जैसे कॉपर आयंस इसमें जो रहेगा ऐसे कैथोड को चला जाएगा. जो भी कॉपर आयन इस सॉल्यूशन में रहेगा वो कैथोड इलेक्ट्रोड को चला जाएगा. दिस इज द केमिकल इक्वेशन. कॉपर सल्फेट गिव्स कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस. At cathode, after electrolysis at cathode, copper 2 plus loses its 2 electron and pure copper metal is formed. This is the pure form. Next go to electrotyping. This is another process of electrolysis. This is used for reproduction of works. Reproduction, again reproduction करना है of works of आर्ट लाइक वुड कार्विंग. जो वुड कार्विंग होता है, वुड से जो बना जाता है उसको रिप्रोडक्ट अगेन तैयार किया जाता है. लार्ज नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्लेट्स इन दिस प्रोसेस this electrolyzing process involves large number of printing plates which are obtained from original type. इस प्रोसेस में लार्ज नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्लेट्स लिया जाता है, ऑब्टेन लिया जाता है. कैसे ना, फ्रॉम ओरिजिनल टाइप. जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है उसे लार्ज नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्लेट्स ऑब्टेन करा जाता है. उसके बाद क्या होता है ना, दिस वाज टेकन, दिस प्लेट प्रिंटिंग प्लेट्स वाज टेकन इन द ब्लॉक्स मीन्स चैम्बर. ऐसे ब्लॉक्स होके रहेगा चैम्बर ब्लॉक्स ऑफ वैक्स. वैक्स लाइक एक मशीन के अंदर एक वैक्स होगा, उसमें these plates are taken and then it coated with graphite conductor and cover करा जाएगा ग्राफाइट कंडक्टर के साथ. ग्राफाइट कंडक्टर इसे कवर करेगा. उसके बाद क्या होगा ना, इन दिस टाइप इस प्रोसेस में क्या होता है ना, एनोड इज यूज्ड आज कॉपर इज यूज्ड एज एनोड. कॉपर मेटल यूज होगा एनोड की तरह. After that, on passing electricity, as we know, this is electrolysis process. So, one is electrode is taken and another is cathode. First one is anode, second one is cathode. And after that, electricity passed. Then the ions move towards cathode. Positive ions, negative ions move towards anode. So that on passing electricity, copper deposited on the layer of wax. Copper वैक्स के लेयर, इम्प्रेशन लेयर, इस लेयर बोलते हैं इम्प्रेशन लेयर. वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा वैक्स का. एंड देन इट इज रिमूव्ड
कब रिमूव करेंगे ना, जब पूरी तरह से डिपॉजिट होगा, सफिशिएंट डिपॉजिट होगा, जब when it is in sufficient amount of copper deposited at the layer of wax, then it is removed. And this process, this electrotyping process, electrotyping means type, electrotyping process used for printing purposes. जो जेरेक्स प्रिंटिंग होता है, प्रिंटिंग पेपर होता है, प्रिंट होता है, वो वहाँ पे प्रिंटिंग पर्पजेस के लिए दिस प्रोसेस इज यूज्ड, दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रोटाइपिंग, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोटाइपिंग. And last process of electrolysis, that is electrolytic extraction of metals. What is electrolytic extraction? Extraction means one compound is extracted from its ore or its oxides of metals, that is extraction. One pure compound is obtained from its ore or oxides of metal. Let's see how extraction occurs. Some metals like sodium, potassium, magnesium, calcium, these metals are extracted by this process. This process involves the extraction of sodium, potassium, magnesium, calcium, etc. एक एग्जाम्पल ले जाते हैं. एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम. सोडियम मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है? फ्रॉम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड एक सॉल्यूशन है, उससे कैसे हम सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे ना. जनरली वी नो NaCl. व्हाट इज NaCl? NaCl मीन्स Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन. ये जब डिजल्व कर जाता है तो आयोनाइज हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन. आयोनाइज होके Na प्लस आयन, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन देता है. देन एट कैथोड, one electrode at cathode, Na plus ion loses its electron, gives Na, and at anode chlorine minus ion gain one electron, Cl minus gain electron gives Cl. Then as is chlorine gas is liberated, then one chlorine atom react with another chlorine atom, Cl plus Cl, gives Cl2, which is gas. This is liberated. This is the extraction, and here pure sodium metal is extracted. This is the extraction process. This is all about today about the application of electrolysis. Next we go through the conductance, resistance, specific conductance, equivalent conductance, and the relationship between them in the next video. Thank you. Just read it, and if you have any doubt, then ask me in comment or contact me.